Hello students, a very welcome to our today's class, and today we are going to start a very interesting chapter, that is conservation of plants and animals. So as the name suggests, we are going to learn about plants and animals and how to conserve them. So before moving to our today's actual topics, let's understand the meaning of conservation. What is conservation? Okay, so conservation, which means protection, preservation. Here, conservation of plants and animals. That means we have to protect the different species of plants and animals, their habitats. In short, protection of ecosystem. You all know that ecosystem consists of variety of plants, animals, living organisms. Yes. So the plants and animals plays an important role in our life, right? Yeah. So we get so many important things to live our life from them. Yeah, so it's our responsibility to protect them, to conserve them. So what do you mean by conservation? That means to protect or preservation of plants and animals. Okay, so let's start. Here I have collected some pictures of animals. You have to identify where are these animals likely to be found. Okay, so here we go. The first picture is, yes, tiger. So where it found? Obviously in forest. Then the second picture is of zebra. So where it found? Think about it. Yes, it used to found in grassland, the places of grassland. Then the third is dolphin. Yes, obviously in ocean. And this is this is a polar bear. This used to found in the polar region. Okay? Yeah. So let us learn about the diversity. First, understand what is diversity. Diversity, which means variety. आपको पता होगा कि in India there are different varieties of people who lives. That means in India आप देखोगे तो India having language diversity, cultural diversity, religional diversity, regional diversity. Yes, so डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो रहते हैं. सो जब उनके लैंग्वेज डिफरेंट होते हैं, दैट मीन्स देयर इज वैरायटी इन देयर लैंग्वेजेस. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी. जैसे कि हर एक रिलीजन डिफरेंट है, हर एक रिलीजन का हर एक कल्चर जो है वो डिफरेंट है. दैट मीन्स देयर इज वेरिएशन, वैरायटी. ओके, सो हियर in this chapter we are going to learn about the variety, variation which used to seen in an organism on the earth and need to conserve them. Okay, different types of organisms जो earth पे है and what is the need to conserve them, that we are going to learn. Okay, so understand this term, that is diversity, which means variation, variety. Okay, so our main actual topic, that is biodiversity. Let's break this word. Okay, what is bio? Bio, which means life, that means living organism, plants, animals, microbes. Okay, living organisms consist of what? All the types of plants, animals, microbes, human beings, microorganism. Yes, and diversity, which means what? Variation, which we have learned over here. Yeah, so our planet is inhabited by many different types of living organisms. Yes, हमारा जो planet है वहाँ पे क्या है? Different types of living organisms है. Yes, they live in variety of places such as forest, grassland, deserts, rivers, oceans and the polar region. जैसे कि हम लोगों ने पिक्चर में देखा, फॉरेस्ट में कौन रहता है? लायन, देन टाइगर. Yes, then ocean में all the types of fishes and all. So every living organism has a variety of places, different places to live. Okay, कोई कुछ और जगह पे रहता है तो कोई कुछ और जगह पे रहता है. Yes, so everyone has their own perspective and own places to live. Yes, so
What is biodiversity? That is the number and the variety of plants, animals and other organisms that exist. It's known as biodiversity. So basically biodiversity which means what? जितने भी variety of plants है, animals, organisms जो ये अर्थ पे रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे biodiversity. Variety of plants, animals and other organisms. Yes. So we can use the term biodiversity while talking about the organisms of a particular region or of the earth as a whole. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि biodiversity which means the organism of particular region, because every region has the different organism, every region has region has the different places. ठीक है. So depending on the climate conditions and geographical area, some regions show higher biodiversity than the others. Okay, so every places has their different climate condition. Okay, इंडिया में भी कुछ जगह क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, कुछ जगह पे वेरी कोल्ड टेम्परेचर रहता है. Yes, so it depends upon what the climate condition and the geographical area. Okay, some region shows what higher biodiversity than the others. Yes. So let us learn the few terms which are associated with biodiversity. Okay. The very first term, that is species. What do you mean by species? Let's learn. They are the group or class of animals or plants having certain common and permanent characteristics. तो ये जो है ये ऐसा ग्रुप है और क्लास है एनिमल्स का और प्लांट का. So they have what? They have common and permanent characteristics, जिनमें कुछ common बातें हैं, कुछ common characteristics हैं, and they are permanent characteristics. Okay, so which clearly distinguish it from other groups and which can interbreed among themselves, जो उनको दूसरों की तरफ से क्या करते हैं? अलग शो करते हैं. Okay, yeah. So for example, Homo sapiens or human beings form one type of animal species. Okay, आपको पता होगा ये कि Homo sapiens and human beings having some common characteristics. Yes, so they form one type of animal species. So this everything you have learned in your history topic also. Yeah. So that is called as what? Species. So remember this term, that is they are the group or class of animals or plants having certain common and permanent characteristics. Okay, yes. Then the very easy topic, that is habitat. What is habitat? The natural environment of plant or animal species where it lives, multiplies and thrives naturally is called as its habitat. जैसे कि हम हमारे घर पे रहते हैं तो हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है. अगर हम किसी और जगह पे जाके रहेंगे तो हमको क्या होगा? थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी वो कंडीशन में, वो वेदर में एडजस्ट करने के लिए. ओके, सो प्लांट एंड एनिमल का भी सेम वैसे ही रहता है. उनका एक नेचुरल एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे वो रहते हैं एंड they gives birth to the different species. Okay, yes. So habitat which means what? Basically it's a natural environment of plant और एनिमल स्पीशीज वेयर दे लिव. जैसे कि टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में रहता है तो फॉरेस्ट ये क्या हो गया? टाइगर का हैबिटेट हो गया. देन फिशेस, ऑल द फिश लिव्स इन ओशन. सो द ओशन और जो एनवायरनमेंट है ओशन का, ओके, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ओशन का वो उनका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया. सेम थिंग हैपन्स विथ प्लांट्स ऑल्सो. ओके, yes. So habitat which means the natural environment. Okay, then the next is flora. What is flora? So here the numerous species of plants living in their habitat are called as flora of a place. बहुत सारे स्पीशीज होते हैं प्लांट्स के जो उनके हैबिटेट में रहते हैं, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो जहाँ पे रहते हैं उस प्लेस को क्या बोलेंगे? फ्लोरा. कौन? प्लांट्स. ठीक है, ध्यान में रखो, फ्लोरा विच मीन्स न्यूमरस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है, लिविंग इन देयर हैबिटेट आर कॉल्ड एज फ्लोरा ऑफ अ प्लेस. ओके, देन द अपोजिट ऑफ दिस इज फॉना.
What do you mean by fauna? That is, the numerous species of animals living in their habitat are called as fauna of a place. Okay, so जो variety of species है, बहुत सारे species है animals के जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो एक हैबिटेट में रहते हैं, तो वो प्लेस को क्या बोलेंगे? फॉना ऑफ अ प्लेस. ओके, यस. So, then the next is endemic species. What is that? Plants and animal species belonging to a specific geographical area are called as endemic species. तो plants and animals जो है वो एक specific geographical area को ही belong करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? Endemic species. Okay. For example, the giant panda is endemic to the mountains of Sichuan, Gansu and Shaanxi प्रोविंसेस इन चाइना. तो ये जो जायंट पैंडा है वो कहाँ पर रहता है? चाइना के ये जो प्लेसेस है उसमें रहता है, और वो उसका एक जियोग्राफिकल एरिया है. ठीक है, वेयर इट लुक लाइक दिस जायंट पैंडा. यू मस्ट हैव seen this before also. So in India, the Asiatic lion is endemic to गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. आपने बहुत बार टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा कि गिर नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, वो कि गुजरात में है. एंड हियर इन दिस पार्क एशियाटिक लायन जो है वो बहुत सारे दिखाई देते हैं, उनके स्पीशीज भी बहुत सारे दिखाई देते हैं. सो ये जो है वो उनका एक जियोग्राफिकल एरिया है. तो ये जो लायन है, एशियाटिक लायन, and its species belonging to a specific geographical area, so that is called as what? Endemic species. Okay, yes. Then migratory species. The name suggests migratory, which means what? Migration which means what? one place से दूसरी place से, वन प्लेस में से दूसरी प्लेस तक जाना. ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना. सो दैट इज कॉल्ड एज अ माइग्रेशन. ओके, so the species of animals that travel long distance at certain times of the year in order to escape unfavorable condition. तो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जो एनिमल्स के, वो क्या करते हैं? वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इन द ईयर. ओके, एक ही टाइम उनका जो रहता है वहाँ पे, वो टाइम पे वो क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं. क्यों करते हैं? टू एस्केप अनफेवरेबल कंडीशन. तो कुछ जगह पे जैसे कि मैंने बोला ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो कंडीशन से एस्केप होने के लिए वो क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस में माइग्रेशन करते हैं. यस, or to find more suitable conditions for feeding or reproducing are called as migratory species. Okay, और एक बात जो है, वही जो उनको suitable condition नहीं मिलता जिस प्लेस पे वो है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं. और एल्स फॉर फीडिंग और रिप्रोड्यूसिंग. ओके, सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज माइग्रेटरी स्पीशीज. So, the phenomenon of movement of animals in large number from one place to other to overcome unfavorable conditions is called as migration. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो जो एनिमल्स है और जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं? लार्ज नंबर में वो उनका ग्रुप रहता है, तो वो ग्रुप में ही वो ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन. सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? That is called as a migration. ठीक है, okay. So observe this picture observe this picture. You must have seen this many times in TV or somewhere in newspaper and all. So these are called as Siberian crane. They are the birds, and the name of these birds is Siberian crane. So for example, migratory birds such as Siberian crane travel great distances and come to India in groups during winter in order to escape cold and unfavorable condition. तो ये जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स है वो क्या करता है? वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड इंडिया में आता है ड्यूरिंग विंटर सीजन. ठीक है, टू एस्केप कोल्ड एंड अनफेवरेबल कंडीशन. The name of these birds are Siberian crane. Okay, yes. So this is all about today. So today what we have learned,
We have learned about biodiversity, its meaning, and the terms which are associated with it, the terms which are related to it, like species, habitat, flora, fauna, endemic species, and migratory species. Okay, so this is a very basic and very easy topic. Go through the video again and again, you will understand the concept. It's very easy. Okay, thank you, students.